हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड हनुमान का ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप इसका अभी भी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हो तो पहले वो दोनों देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसका रेफरेंस पिक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, यहाँ पे मैं 2 मीडियम्स का यूज कर रहा हूँ। ये वाला आर्ट वर्क बनाने के लिए मैं चारकोल एंड कलर दोनों का यूज कर रहा हूँ। सो पहले तो मैं यहाँ पे उंगलियों पे डिटेल्स कर रहा हूँ चारकोल से। उसके बाद अंगूठी पे आऊंगा। डिटेल्स देने के लिए मैं चारकोल पाउडर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। देन लाइट शेडोज एंड डिटेल्स के लिए मैं चारकोल पेंसिल एंड टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वो दोनों पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। उस पर मैंने और भी डिटेल्स में समझाया है। ये वाले पोर्ट्रेट में डिटेल्स बहुत सारे हैं, इसलिए आपको पहले अच्छे से रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करना होगा। शैडोज एंड हाइलाइट्स का ही पूरा खेल है। आप उसको जितने अच्छे से करोगे आपका वर्क उतना ही रियलिस्टिक होगा। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, कभी कभी होता है कि आप बहुत देर से ड्रॉ कर रहे हो, वो आपसे नहीं बन रहा है या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं बन रहा है। ऐसा होता है सभी आर्टिस्ट के साथ। तब आप थोड़ा रेस्ट ले लो या बाहर से घूम के आओ। मेरा बोलने का मतलब यही है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर वही चीज़ आप बाद में इजीली बना लोगे। अब आता है कलरिंग पार्ट। यहाँ पे मैं पहले येलो वाटर कलर कर रहा हूँ, फिर मैं शैडोज करने के लिए चारकोल एंड क्रेयॉन का यूज कर रहा हूँ ताकि गोल्डन लुक आए। एंड लास्ट में मेटालिक फैब्रिक कलर से हाईलाइट्स पार्ट कर रहा हूँ। फिर जो लॉकेट है वो भी गोल्ड का ही है, उसमें भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
हनुमान जी का गदा में भी डिटेल्स के लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हनुमान जी के पेट में जो छोटे छोटे डिटेल्स है वो करने के लिए मैं मोनो जीरो इरेजर के यूज कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। एट लास्ट बैकग्राउंड के लिए मैं चारकोल पाउडर एंड ब्रश का यूज करके बैकग्राउंड कर रहा हूँ। सो गाइज लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये सीरीज़ यहीं पे एंड होता है। आप सबको ये वीडियो एंड ये सीरीज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल्स के लिए। वंस अगेन थैंक यू गाइज। भारत माता की जय।